Hello everyone. I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang Teachings, powered by Vedang Institute of Technology. Basant Das, very good morning. Very good morning. छिपा क्लास स्टार्ट करिबा तो आजिर क्लास किछि ए टाइप रो तम मानकर अछि तो देखो ओशन रो वाटर सलाइन इन नेचर सल्टी इन नेचर सेटा आपण माने समस्ते जानि छथि ओके बट आजिर क्लास रे देखिबा कि केते अमाउंट रो सल्टी रहे को ओशन रे केते की सल्टीनेस रुहे या फिर ता जोगु हमरो एक्वाटिक एनिमल्स मानकर कोन डिफरेंस ताको ऊपर कोन इफेक्ट पड़े एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके अविनाश वेरी गुड मॉर्निंग हैला तो आसो ताकू देखिबा पूर्वरु फास्ट देखो कोन कोन हमर पेड बैच लॉन्च हेछि आपण मानक पई द्रोण बैच लॉन्च हेछि जोटा कि एसएसबी टीजीटी पिलांक पई जो माने एसएसबी टीजीटी पई प्रिपरेशन करूचंती 1 ईयर वैलिडिटी सहित प्राइस 1499 ओनली जो माने जेटी या फिर 80 पई आपण माने प्रिपरेशन करूचंती प्रारंभ बैच आपण माने नै परिबे 1 ईयर वैलिडिटी सहित प्राइस 1199 एंड जदि आपण माने संस्कृत रा स्पेशल बैच नेबा पई चाहुचंती द स्पेसिफिक संस्कृत बैच आपण माने एसएसबी टीजीटी अंडर से आसुची नै परिबे 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1499 रहूची प्राइस हैला चलो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आपण माने कोनोसी वन डे एग्जामिनेशन टाइम प्रिपेयर करूछंती देन भी आपण माने महापैक को अवेल करि परिबे 3999 रे वैलिडिटी रहूची 2 इयर्स वैलिडिटी रहूची एंड या भीतर जेते वन डे एग्जामिनेशन आसीबो से कवर अप हेसिबो अब सब एग्जामिनेशन रो वैलिडिटी 1 ईयर बट महापैक जदि नउचंती से सब एग्जामिनेशन रो वैलिडिटी बढ़ी की 2 इयर्स हेचिबो दैट्स इट अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आपण माने सिविल सर्विस पर प्रिपरेशन करूछंती अधिकारी बैच ओसीएस प्री 2025-26 ईयर पे आपण माने प्रिपेयर करि परिबे विथ द वैलिडिटी 1 ईयर प्राइस 6999 अधिकारी प्री प्लस मेंस आपण फाउंडेशन बैच नै परिबे वैलिडिटी 1.5 ईयर देन तार प्राइस रहउची बहुत ही नॉमिनल 11999 ओके देन आपण माने मेंस बैच या फिर प्रीलिम्स बैच भी नै परिबे किछि क्वेरीज अछि एठी आपण माने को हेल्पलाइन नंबर मेंशन हेची ऑफिस नंबर को कॉल करिवे एंड आपण मानकर क्वेरी रिजॉल्व करि पारिबे चलंतु जीवा फास्ट क्वेश्चन को बिफोर दैट त मानकु कहि दोउची सबु बेले मन रखिबो जते बेले जो क्वेश्चन पचारुछ ताकू व्हाई व्हाट हाउ व्हेन ए क्वेश्चन उडा को निजे पचारि चालिबो सेमितिरे तम फंडा क्लियर हेई सालिबो ओके गुड मॉर्निंग रतिकांत गुड मॉर्निंग सागर गुड मॉर्निंग मधुस्मिता गुड मॉर्निंग एवरीवन हैला आसो तो क्लास रा टाइमिंग्स किछि आपनकर एमिदी रहउची मंडे टू सैटरडे आपण मान जानि चंदी क्लास टाइमिंग एंड मोर सैटरडे क्लास रहु नथिला एंड एबे मोर आपनकर सैटरडे भी क्लास रहिबो तो सुदीप्ता मैम आपण मान एठी लिखि दियंतु कि सैटरडे भी क्लास रहउची हैला तो 2 दिन जियोग्राफी पढिबा देन बाकी गोटे दिन हिस्ट्री पढिबा दैट्स इट बाकी ये रहिला आपण मानकर क्लास रो टाइमिंग्स क्लियर चलो एसएसबी टीजीटी पाई 1499 एते पैसा कोन करिबा बंधु पैसा जोठी आपण मानकर क्वालिटी सेठी ना आसा फर्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अब्यूडेंट सॉल्ट इन सी वाटर क्वेश्चन कोन कहै छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अब्यूडेंट सॉल्ट इन द सी वाटर मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड या फिर पोटासियम सल्फेट आंसर करिबा पूर्वरु तमान को किछि डिटेल रे मु कहिबा पई चाहूची फॉर एग्जांपल सी एठी लेखो कोन कहि परिबा फर्स्ट थिंग्स आपण मान को माइंड रखिबा को पड़िबो आसीबा सुनल ता ऊपर को आसीबा आंसर ऊपर को व्हाट इज लाइक इन द वाटर एक्चुअली कंपोजिशन कोन थाई वाटर भितरे कंपोजिशन कोन अछि जानिले ही आपण माने थरोली आंसर करि परिबे आपण माने जानि चंती सी वाटर इज नॉट जस्ट अ सॉल्ट वाटर इट इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल सूप कोन कहि परिबा ना सी वाटर इज नॉट अ सिंपल सॉल्ट वाटर दिस इज अ व्हाट ना एनी सी वाटर दिस इज लाइक अ
complex chemical soup. Okay, and जदि आमे कहिबा कोन एमिति दीटा जिंस अछि जोटा कि मेजरली प्रेजेंट रहुछि हमर सी वाटर रे या फिर सॉल्ट माने हमर ओशन वाटर रे सोडियम क्लोराइड फर्स्ट थिंग मने रख कोन कहूचे ना सोडियम क्लोराइड प्लस आउ गोटे कोन रहुछि सोडियम क्लोराइड सहित मन रख मैग्नीशियम क्लोराइड ओके आउ गोटे कोन ना मैग्नीशियम क्लोराइड तो मेजॉरिटी आपनकर कोन रहउची ना सोडियम क्लोराइड ओके आउ टिके कम अमाउंट रहउची मैग्नीशियम क्लोराइड जदि कहबा मेजॉरिटी रे मैम केते रहउची सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट कहि परिबा 77.7% केते 77.7% आपनकर रहउची मैग्नीशियम सॉरी सोडियम क्लोराइड whereas just 10.9% आपनकर मैग्नीशियम क्लोराइड रहउची हमर ओशन वाटर रे एत्ति की जिंस बुझी परिला डेफिनेटली बसंत दास सर को पचारो सर जदि अवेलेबल करई परिबे देन आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट हैला तो मेजरमेंट अकॉर्डिंग आपण माने बुझी परिले एंड वी यूज कहा को ना जे कोनोसी मेजरमेंट को हमें नउचे या फिर ए जो केमिकल प्रॉपर्टीज गुडा को रहउची केमिकल कॉम्प्लेक्स गुडा को रहउची हमें ताकू नेई परिबा as what ना we use that the parts for the 1000% यदि हमें 1000% को कैरी करिबा अकॉर्डिंग एटा को हमें कि एति की परसेंटेज रे नउचे पर हमें कहि परिबा ग्लोबल एवरेज आपनकर केते रहउची ना 35% and that means हमें कहि परिबा 1000 ग्राम रे like 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर हमें नेबा सेतिरे 35 ग्राम्स ऑफ हम कोन ना डिसॉल्व्ड सॉल्ट लोडी पाइबा तो सॉल्ट रो जदि हमें पचारुछे केते ना 1000 ग्राम्स रे ओके देन आपण मानकू केते मिलिबो ना only 35 grams of salt you can find over there okay so this is the basic thing आपण मानकू जानिबा निहाती दरकार थिला आफ्टर दैट आपण मानकू क्वेश्चन पचारिबो कि सोर्सेस कोन सब सोर्सेस रो आपण मानकू मिलुची salt आपण मान जानि संती that comes from the weathering of the rocks or the land हमें कहि परिबा that is carried by the rivers and volcanic eruptions रे भी आपण मानकू आसुची जोटे कि volcanic eruptions on the ocean floor ता परे भी आपण को salt recovery हेई पारुची even though आपण माने कहि परिबे there is two types कोन कहूचे two types रो रहउची फर्स्ट थिंग आपण कहली कंपोजिशन ताको मैटर करे second thing this is the composition of the sea water third thing आपण माने कोन कहिबो ना the horizontal distribution that means why is it saltier in some places and किछि फ्रेश वाटर भी आपण मानको अवेलेबल अछि किछि ब्रैकिश वाटर भी अवेलेबल अछि बट जते बेले हमें कहूची किछि केसेस रे saltier हमें पाई पारुचे बट से saltier कोथि पाई the salinity is a tug of water हमें कहि परिबा that is between the factors that add water that means dilute हेकी dilution हमें कहि परिबा and the factors that remove water that means हमें concentration कहि परिबा so the method between the concentration and dilution हमें कहि परिबा salinity exist करूची बुझी परिलो latitudely एटा त आपनकर कोन रहउची ना टोटल हॉरिजॉन्टली देखि देलो देन एबे को मते लैटिट्यूड रूल किछि रहउची कि जेमिति कि इक्वेटर रे आपनकर सैलिनिटी सब बेले कोन रहिबो ना इक्वेटर रे मने रखो सैलिनिटी प्रेसिपिटेशन रहिबो दैट मींस वेरी लो रहिबो जदि हमें देखिबा इक्वेटर रे कीप इट इन योर माइंड इक्वेटर रे सैलिनिटी आपनकर लो रहिबो सो हमें लिखि परिबा दिस इज लो सैलिनिटी एरिया एट द इक्वेटर even the question is asking about the tropics then apan karo 20 to 30 degree north or south सेठी आपण मानकर हाई salinity रहिबो ट्रॉपिक कथा जदी पचारिबो कोन हबो ना हाई salinity हो एते के क्लियर बुझी परिलो आ जदी पोल्स कथा कहूची पोल्स रे अगेन आपण करो लो salinity हे जिवो पोल्स रे आपण मानकर कोन पुन थरे लो salinity हे जिवो एते के जिंस आपण मानको मने रखिबार अछि तापरे क्वेश्चन कोन आसुची ताको देखिबा
बुझी पारला मधुस्मिता मोनी यस द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपनकर अछि जेमिति सरफेस टू लाइक सरफेस लेयर आपनकर सैलिनिटी वेरी करे ड्यू टू द व्हाट ड्यू टू द वेदर द रेन द इवापोरेशन ता अकॉर्डिंग आपनकर सैलिनिटी वेरी करिवो इवन द कोन हैलोक्लाइन आपन माने सुनिथिबे दिस इज अ स्पेसिफिक आपन माने जोन कहि परिबे यूजुअली हमें जते बेले ओशन न भीतर को जाउचे बिटवीन 300 मीटर टू 1000 मीटर डेप्थ भीतर को where the salinity changes sharply भीतर को आपन माने जिबे जदी salinity चेंज हे जिवो that we have to keep in your mind in the high माने latitude areas हमें कहि परिबा salinity increase करिवो with the depth and in the tropics it may decreases that's it then deep ocean भीतर को जदी हमें जाउचे then हमें कहि परिबा below the halocline एता पूरा डीप ओशन को पळेले माने 1000 मीटर तळ को पळेले से हालोक्लाइन रो तळ को आरी पळेले अप टू 300 टू 1000 हमें ताको जे हालोक्लाइन जोन एठी लिखि दोची अप टू 300 रु 1000 मीटर ताको हमें कोन कहूचे ना दिस इज हालोक्लाइन जोन ओके आफ्टर दैट जदी ता तळ को हमें जाउचे दैट मींस डीप वाटर को हमें जाउचे सेथिरे आपनकर चेंज हेई पारे that means where salinity changes sharply हमें कहि परिबा in the high altitude but the deep ocean को हमें जाउचे below the halocline salinity is कोन हबो ना that is very stable हबो because it is कोन हबो ना आपनकर seal dead हबो जेते सब seal आपन माने देखु चंदी से माने सब dead थान सेठी for the surface water so salinity सेठी आपनकर गोटे constant condition रे थाए because सब dead living beings माने आपनकर aquatic animals माने से तळे ही जाई कि बसिथिबे हैला चलो सो फिजिकल इफेक्ट भी ऑफ सैलिनिटी सम आपण माने रिलेट करि परिबे जेंति कि डेंसिटी आपनकर इंक्रीज होउची बॉइलिंग पॉइंट आपनकर इंक्रीज होउची लाइक सॉल्ट आपनकर कोन ऐड करूची मासेस को ओके ता अकॉर्डिंग आपण माने कहि परिबे सॉल्टी वाटर इज हेवी एंड सिंक्स दैट्स व्हाई आपनकर कहि परिबे दिस इज व्हाई द डेड सी अलाउज द ह्यूमंस टू फ्लोट कोन एफर्टलेसली ओके चलो एगुडा देखिबा क्वेश्चन आंसर टिके करिबा तापर जहा डाउट आसीबा पुर पछरिबा सो या अकॉर्डिंग मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अब्यूडेंट सॉल्ट इन सी वाटर कहितली मोस्ट अब्यूडेंट कहिले कोन कहबो ना फर्स्ट थिंग होची सोडियम मैग्नेसाइड सोडियम क्लोराइड जदी तापर आपन को पछरा गला ताहाले मैग्नीशियम क्लोराइड एतिकी कहि परिबो त yes or no को मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन सी वाटर but in much smaller proportion compared to the sodium chloride केते कहितली परसेंटेज केते कहितली कांदिबो परे बसंत आगा आंसर दे दियो परे कांदिबो हैना गुड मॉर्निंग समन्विता yes that is the C1 sodium chloride आपनकर 77 नु 78% approximately total dissolve हेकी salt water like आपनकर sea water भितरे salt dissolve हेकी थाए that making it the most abundant salt next question मते को so the sodium chloride next sorry अरे यार what the hell is अच्छा सो सोडियम क्लोराइड को हमें कौन कहउचे ना प्राइमरीली हमें जानि छे एको कोन ना as the common salt होना नहीं माने टेबल सॉल्ट ओके चल नेक्स्ट मते कहइबो the average salinity of the world's ocean is the average salinity of the world's ocean is what 30 parts per thousand 35 parts per thousand 40 parts per thousand 45 per thousand आपण मानकु जेते बेले पचारुछि एवरेज salinity केते हबो very good that is the 35 parts per thousand हबो 35 parts आपनकर हबो 30 काई कि हबोनी because हम जानते this is a too low 35 कोथि पई हबो because हमें जानि छे globally this is a acceptance of the average ocean salinity केते ना 1000 ग्राम रे 35 ग्राम एबे ही तमान को कहिली मने पडुची केते ना 1000 ग्राम रे 35 ग्राम्स ओनली एटा हमरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेंस करा जाईची okay next question mate ko so the average salinity 35% mate ko the highest surface salinity is typically found at the highest surface salinity is typically found at where quick eta kiye koi pariba mate the highest surface salinity is typically found at the equator the tropics the arctic circle the antarctic circle तमानकु बुले बुले कहिथिली जेते बेले हाईएस्ट सरफेस सैलिनिटी पछारिबो कोठी के जिवो ऑब्वियसली आपण माने ट्रॉपिक्स को जिवे बिकॉज़ 20 टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तमानकु कहिथिली इक्वेटर हमें जानि छे डिस्पाइट ऑफ द हाई टेंपरेचर लाइक हेवी रेनफॉल आपण कर रुहे सेटा आपण कर रिड्यूस करि दे कोन ना सैलिनिटी को बिकॉज़ ऑफ व्हाट
because of the heavy rainfall जोठी heavy rainfall हबो आपण मानकर salinity को से कोन decrease करै दबो then right answer आपनकर कोन हबो obviously आपनकर tropics हबो हन नै को high temperature and a maximum evaporation with low rainfall हबो evaporation भी बढ़ुची rainfall भी कमुची then हमें कहि परिबा that result the highest surface salinity yes or no मते को Arctic region आपनकर हबो नि Arctic circle have a low evaporation and melting of the ice reduces the salinity जेते बेले आपण माने आर्कटिक रीजन को जाउचंदी चारियाडे देखुचंदी आईसी अछि आईस जेतले मेल्ट हबो से आपनकर सैलिनिटी को धोई कि नेकी पळेबो एंड एवापोरेशन जेतु कम होची ताहले सैलिनिटी आपनकर बजाय रहिबो नेक्स्ट होची द अंटार्कटिक रीजन भी हमें सिमिलर टू द आर्कटिक रीजन कहि परिबा आइस मेल्ट करिवो दैट बिलोंग्स टू द लोअर सैलिनिटी लेवल्स अगेन ओके चल सो राइट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच फैक्टर इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर the lower salinity at the equator कोथि पाई इक्वेटर रे लोअर salinity बिलोंग हुए rather than तो आपनकर कोन ना आर्कटिक जोन हैला ट्रॉपिक्स होइला हमें इक्वेटर को काहे के रिलेट करबा व्हिच फैक्टर इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर द लोअर salinity क्विक को माने कहि परिबे ट्राई करो आंसर दियो समन्विता क्विक ऑप्शन सी पक्का yes because of the heavy rainfall हमें कहि परिबा salinity level कोन लोअर करै दिए because high evaporation भी गोटे cause but हमें कहि परिबा the evaporation actually increase करे salinity को but एटी decrease कथा पचाछि decrease कला फल रे त आपनकर salinity बढ़ी चलिबो यदि salinity increase हे चलिबो evaporation हैला या फिर heavy rainfall हैला एउडा को हमें कहि परिबा it can कोन डिक्रीज आपनकर करे evaporation आपनकर salinity level को कोन करे ना इंक्रीज करे दिए ठीक अछि एंड लो टेम्परेचर कहिले इक्वेटर रे आपण माने जनरली जदी देखिबे द रीजंस हैव ए हाई टेम्परेचर जोन नॉट एट ऑल ए लो टेम्परेचर जोन सो ऑब्वियसली आपनकर हेवी रेनफॉल इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट द कंटीन्यूअस कोन कन्वेक्शनल रेनफॉल कोन डाइल्यूट हुए इन द सी वाटर एंड दैट रिड्यूसेस द salinity in the water level तो हमें रिलेट करै परिबा कहा सहित वन एंड ओनली हेवी वाटर सहित am I clear tanusa yes next so the lower salinity at the equator despite high temperature that causes the high evaporation next question mate kuh a line connecting points of equal salinity is called तम मानकु previous class रे मु कहिथिली what is the isotherm what is isobar what is isohaline what is isobath सब जिनस मु तमनको प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी कहि सारिथिली देखिबा केते जण मने रखिचंदी आइसोथर्म जते बेले कहूची कोन कहबो आइसोथर्म जते बेले कहूची से कनेक्ट करी की रखे पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर एठी आपनको इक्वल सैलिनिटी कथा कहिची आइसोथर्म रो काम कोन ना पॉइंट्स कनेक्ट करी की रखिबो पॉइंट्स ऑफ व्हाट ना इक्वल पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर एठी पळे आसीला दैट इज द आइसोथर्म एलिमिनेट हे गला देन आपण मानको कोन कहिदिले आइसोबार को केमिति मन रखिबो ना पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एठी आपण माने याकू रिलेट करै परिबे इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके देन isohaline को कहा से रिलेट करे परिबो मते कुहो that is the connecting points equal salinity on the oceanographic map so हमें कहि परिबा isohaline is related with कोन ना हमर salinity बाकी isobath कोन कहिथिली anyone can isobath सी हबो भूली गला मु तमानकु isohaline कहि नथिली बाकी सबुति कोन कितु कहिथिली तमाने जदी मने रखि थांतो इजीली एलिमिनेट करि पारि थांतो बट तमे माने तो तमे काई मने रखिबो आसो त आइसोबाथ कहले कोन कहउची ना दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ बिलो द सी लेवल एठी कोन हे गला ना इक्वल डेप्थ कथा कहिची बिलो द सी लेवल am I clear बुझी पारिलो चारटा जाकर डिफरेंस कोन कोन कहिला चलो so isohaline is a line on a map of the chart that connects the points of equal salinity next question मते एबे कुआ आ पार्टिसिपेट करो भूल हो नो मैटर ठीक भी हबो हैला मते कुआ the layer of water where salinity increases sharply with depth is called what मते कुआ the layer of water where salinity
increases sharply with depth. With the depth पचारिची depth कहितली एबे कोन कहितली salinity देखो depth कथा कहितली तमनकु एठी कोन आइसो बात कहितली ना नै मते कुआ बट क्वेश्चन एठी कोन पचारिची the layer of water layer कथा कहि देछि जेते बेले layer कथा आसीबो तमनकु halocline very good layer कथा जेते बेले पचारिबो halocline हबो because thermocline means आपण माने कोन जानले what do you mean by the thermocline anyone can tell me the definition साहू आरती बहुत लेट रे क्लास को आसी जाजी नॉट फेयर व्हाट जाइथिला आसो तो थर्मोक्लाइन कहले कोन बुझुछ ना थर्मोक्लाइन इज द लेयर वेयर हमें कहि परिबा टेंपरेचर चेंजेस रैपिडली विथ द डेप्थ हमें कहि परिबा सैलिनिटी सहित किछि कोन ना आपनकर रिलेशन रहिबनी एठी आपनकर टेंपरेचर चेंज हबो with कोन ना with the depth ओके आपनकर पाइक्लोक्लाइन कहिले कोन बुझुछ मते को व्हाट डू मीन बाय द that is the pinocline the pinocline कहिले कोन बुझुछ ना this is refer to the layer where the density changes sharply which may be due to the temperature or maybe the salinity but it is not a specific for the salinity we can say not alone for the reason salinity okay so right answer कोन कहि परिबा ना pinocline को हमें रिलेट करै परिबा density change सहित between what ना the density changes and after that the mesosphere the mesosphere कहले हमें कोन बुझुचे मते को राइट आंसर त आपण माने halocline जानिले जोटा कि आपनकर रैपिड चेंज हुए between the salinity with the depth but mesosphere जेते बेले mesosphere कथा कहूची आपण माने सीधा पळे आसुतबे this is the sphere this is the layer of the atmosphere हन नै मते को so mesosphere is a layer of atmosphere troposphere stratosphere mesosphere तो mesosphere कोते बेले नंबर आसुची ना 3 नंबर रे आसुची that is not related with the कोन ocean water layer सहित किछि रिलेशन नै am I clear guys bagho good morning asa next mate ko the Dead Sea has a very high salinity because of what the Dead Sea has a very high salinity कोथि पई Dead Sea मु तमानु कहि दिनी means आपण माने जते बेले पूरा तळु को पळौचंती डेप्थ को पळौचंती सेटा रे आपण मानकु कोथि पई हमें salinity अधिक थाए कहूचे the Dead Sea has a very high salinity because of the कोन because of the high evaporation and lack of outlet काहे के हमें आकु रिलेट करे परिबा yes option C is the right one मते को massive river rainfall काहे कि हबो नाही कारण जदि अधिक रिवर रे आपनकर रेनफॉल ऐड हैला रेन वाटर ऐड हैला सी आपनकर कोन करिवो ना रिवर इनफ्लो जनरली डिक्रीज करे दिए सैलिनिटी बाय एडिंग द फ्रेश वाटर तो एठी आपनकर कोन ये करूची ना डिक्रीज करे दबो आगे रहिला एठी क्वेश्चन पचारि छे अबाउट द इंक्रीज तो इंक्रीज कथा कहिची मींस आपनकर हाई इवापोरेशन एंड लैक ऑफ आउटलेट कहि परिबा because we know जते बेले आपनकर डेड सी कथा आसुची इन अ लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी Dead Sea means कौन रहउची in a landlocked water body with a intense evaporation and there is no outlet to कोन आपनकर किछि वाटर जदी आसुची either water जदी बाहर को जीवो that is the only way of evaporation जदी आपन मानकर वाटर इंक्लूड होउची that is the only of the rain water एई सब जिंस रे आपन मानकर salinity loss ही हेबा को टाइम मिलुनी तो रिलेट हम याकू करे परिबा ओके चलो so the presence of coral reefs को हमें कौन कहि परिबा ना coral reefs have no role in the increase of the salinity आपनकर coral bleaching पढेला बेले तमानी को कहिबी एते के बुझी परलो चलो Dead Sea is a landlocked water body in the hot arid region water enters mainly through the Jordan River but there is no outlet as intense evaporation removes water and leaves salt behind salinity becomes extremely high बहुत रु बहुत salinity आपनकर हेसे clear guys next question मते कुह which of the following seas has the highest salinity को सी रे हमें देखुचे has the highest salinity एटा SSB TGT पाई हेल्प हबो की SSB TGT रो ही क्लास करूची त माने कोन भाबुचो ताले SSB TGT रो ही क्लास चालुची बसंत को दुनिया रे अछो आसो Which of the following seas has the highest salinity? Highest salinity कहले one and only नाही रे
कहीं मेडिटेरेनियन को कहीं जाऊच जोठी ऑप्शन तमानकर रेड सी अछि जोठी ऑप्शन है तमानकर रेड सी अछि सेठी मेडिटेरेनियन को कहीं कल रेड सी आपण मान को कहिबा को पड़िबो हैज अ एक्सट्रीमली हाई एवापोरेशन जोठी एक्सट्रीम एवापोरेशन हुए सेठी आपनकर सैलिनिटी अधिक हुए हॉट क्लाइमेट हेले सैलिनिटी अधिक हुए मिनिमल रेनफॉल हेले भी सैलिनिटी अधिक हुए एंड लिमिटेड रिवर इनफ्लो रहिले भी मेक इट वन ऑफ द कोन ना सल्टीएस्ट सीज आपण माने कहि परिबे ऑलमोस्ट केते ना 40% ऑफ सल्ट ये एक्वायर करै थाए हना नै खो ओशियोनोग्राफी सिलेबस रे अछि कि चेक करि दियो तमे सिलेबस आसो त कास्पियन सी कोन कहि परिबा ना सैलिनिटी वेरी करे because of the widely कोन आपनकर widely land city present थाए जनरली हमें कहि परिबा that is lower than the red sea but mediterranean sea आपण माने जो कहउसंती this has a high salinity but that is less than the red one it is कोन ना less than it is always less than the red sea clear चलो देखो so option A very high evaporation low rainfall almost no river inflow restricted water extends with open ocean that's why me kahi pariba that is kona related with the saltiest one is the red sea next question mate kuho the Arabian Sea katha pacharichi mate kuho the Arabian Sea has a higher salinity than the Bay of Bengal कोथि पई बे ऑफ बेंगल आपण माने निजे जाईथिबे पूरी समुद्र कूल रे गाधेइथिबे देह रे जेबले पानी लागे देखिथिबे केमती स्किन रो कंडीशन हेई जाय माने सेठी कोनो से सनस्क्रीन भी काम करेनी जदि ता कूल रे जाई बसी भी जाओ बट स्टिल बे ऑफ बेंगल टू अधिक सैलिनिटी आपनकर रहुची अरेबियन सी रे त मते को व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट कोथि पई बिकॉज़ very good those are giving B they are right so it receives less river water and has high evaporation जोठी evaporation अधिक हबो water inflow कम हबो rain water कम हबो सेटा को ही हमें रिलेट करै पारिबा हो आसो so right answer कौन कहूची ना it receives less river and has a high evaporation it has more coral reefs हमें कहि परिबा कि it has more coral reefs do not influence the large scale of the salinity pattern coral reefs रे या सहित किछि दूर दूर तक रिलेशन नहीं clear next कौन कहूची ना it is closer to the equator हमें कहि परिबा कि it is closer to the equator that's why देखो both the seas lies in the tropical regions proximity हमें कहि परिबा to the equator alone is not कोन decisive तो दीटा जाक आपनकर सेम रीजन रे ही रहउचंती it has colder water देखो colder water reduce करिबा आपनकर evaporation को Arabian Sea is a relatively warmer आपण माने जानि चंती because of the माने rather than the Bay of Bengal आपनकर Arabian Sea टिके warmer रहिबो कारण जते अधिक कोल्डर रहिबो से रिड्यूस करिवो सेति के evaporation जदि हाई evaporation हेला ही आपनकर salty salinity बढ़िबो ओके चलो नेक्स्ट मते कुह the formation of sea ice causes the salinity of remaining water too the formation of sea ice कौन कहूची जा हो बाघ आजिकली मते खाई की माने जिबा को पडुची जोडे खाइबा पय भी मते कहि के जाउची चलो मते को the formation of sea ice because the formation of sea ice cause the salinity of the remaining water to कौन करे increase करे decrease करे stay the same or feed drop करे obviously इग्नोर कर आमे जते बेले पाठ पढिबा को आस्थाय बहुत सारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आसी थांती तो तांको हमको इग्नोर करी कि पढा रे फोकस करिया को पड़े हैला जते बेले आमे मूवी देखुचे ऐड आसुची ना नहीं पुनी आमे डेस्परेटली वेट करूचे त केते बेले ऐड सरीबो केते बेले स्किप ऐड आसीबो मु मारी कि पुनी आगो को क्लास करिवि माने आगो को मूवी देखिबि ठीक सेम माइंडसेट आपण माने रखिबा दरकार हैला नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू चलो सो राइट आंसर कोन हबो डिक्रीज तो हबो नाही कौन होची ऑब्वियसली आपनकर इंक्रीज हबो केमिति डिक्रीज हबो त माने को कहितली केमिति डिक्रीज हबो कहितली मु जानि परलिनी इंक्रीज तो हबो ना अमित काहे की डिक्रीज हबो when the sea ice forms
नहीं जदि आपण माने पेड सब्सक्रिप्शन नौसंती यूट्यूब रो ओनली वन जदि आपण कोनोसी स्टूडेंट आईडी रु घरे छोट पिला भी थिबे जो माने स्कूल ले पढी थिबे तांको आईडी प्रूफ आनी कि आपण माने नै परिबे आराम से मासुकु ओनली 89 रुपीस या फिर समथिंग केते नौची बुझिलो तो सेइथरे आपण मानकर यूट्यूब एड फ्री हे जिवो कोनोसी एड आपण पाखु आसीबो नाही आपण माने सेटा ट्राई करंतु हैला मते इरिटेट लागे एड सेति मु एड फ्री ही यूज करूची आ जदि अधिक पैसा अछि से 160 ना 170 कोन नौची ताको भी आपण नै परिबे घरे बो मो ऊपर चिड़िले मु जेमिति अवॉइड करे सेमिति एड को अवॉइड करो यस बाघ चलो सो राइट आंसर कौन होची इंक्रीज करियो बिकॉज़ वी नो व्हेन द सी वाटर और व्हेन द सी आपनकर कोन ना आइस फॉर्म्स करे द सॉल्ट इज एक्सप्लेड इनटू द सराउंडिंग वाटर एंड इथिर आपनकर इंक्रीज करिवो सैलिनिटी को डिक्रीज केमिति करियो मते भाबी के कुह डिक्रीज कौन करिवो ना डिक्रीज भी हुए बट अकर्स ड्यूरिंग द आइस मेल्टिंग पीरियड रे ओनली दैट मींस कोठी की अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन को हमें रिलेट करे परिबा नॉट कोन फ्रीजिंग रे आपे कहिबान जते बेले मेल्ट होबो सेते बेले कहि परिबा एठी पा ओनली आपन को फ्रीजिंग कथा पचारी छी है चल when sea ice forms most of the salt is excluded from the ice crystal as a process called the brine rejection mone rakha process ta ko kon कहू छै this is brine rejection so this salt is released into the surrounding water making the remaining sea water more saline in nature हैला कौन मैम बुझी हेलानी आउथरे कोंतु अच्छा देखो द फॉर्मेशन ऑफ सी आइस जते बेले सी आइस आपनकर ओनली फॉर्म हेबा कथा पचारि छी आपन को एटी मेल्ट हेबा कथा पचारनी जते बेले आइस फॉर्म हेबा कथा कहूची सेते बेले कहबे कि इंक्रीज हबो बिकॉज़ आपन मान जानि संती जते बेले सॉल्ट आपनकर कोन वाटर रे थाए सी वाटर भीतर सॉल्ट कैरी करी कि रहे होना नहीं मते देखो एंड जते बेले आपनकर कोन ना सॉल्ट जते बेले एक्सपेल्ड हे जाय हम कहि परिबा सॉल्ट इज एक्सपेल्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर सेते बेले आपनकर सैलिनिटी कोन ना इंक्रीज हे जिवो जते बेले से मेल्ट हबो धीरे धीरे सेते बेले आपनकर सैलिनिटी डिक्रीज हे जिवो तो गोटे जिंस मन रखो जते बेले आपनकर फ्रीजिंग कंडीशन आसीबो जते बेले आइस फ्रीज हेबा को लागिबो सेते बेले एटा इंक्रीज हबो जते बेले मेल्ट कंडीशन आसीबो सेटा डिक्रीज हबो दैट्स इट हैला ऐड ऑफ करिया कथा कहिलो कोन आ कहि मु एबे ऐड ऑफ किंती करियो सेटा बुझी अच्छा सुना किछ नै क्वेश्चन माने नॉर्मल तम मानकु जते बेले आसीबो YouTube अकाउंट को जाई कि ऐड फ्री ऑप्शन आसीबो जते बेले ऐड फ्री ऑप्शन आसीबो सेठी तम माने जाई कि स्टूडेंट वाला कोड को यूज करि परिबो तो स्टूडेंट कोड यूज करले आपण मानकु गोटे आईडी प्रूफ मागिबो दैट यू आर ए स्टूडेंट तो एमिति तो तम मानक पाखरे आईडी प्रूफ नथिबो यदि कॉलेज रे आपण माने पढुचंदी देन आईडी प्रूफ देखै परिबे या फिर जदि सान भाई भौणी की अछंती तांकर आईडी प्रूफ ता को आपण माने देखै कि as a student login करि परिबे as a student login कले त मानको ओनली 89 बोधे पडुची मंथली केते कोन कटुची मोर मन नै मु सान भौणी रो आनी की लगे देछि हैला तो सेथिरे ऐड ऑफ हे के आसुची ठीक अछि सेमिति को ट्राई करि परिबो आसो त मते को salinity is generally measured in grams per light liter कोन कहिथिली ग्राम parts per 1000 रे कहिथिली होना नै मते को salinity तमानु केते कहिथिली ना 1035 ग्राम कहिथिली सो parts per 1000 रे कहिथिली किछि एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड स्टार्टिंग रे मु तमानु को ब्रीफिंग किछि करे दोछि सो दैट किछि आईडिया आसे जो स्टूडेंट्स माने स्टार्टिंग क्लास रे जॉइन हो नांदी से माने टिके प्रॉब्लम क्रिएट होलो हैला ओके चलो so salinity which is the total concentration of dissolved salt in water is typically and generally expressed in the parts per thousands like part 3 हैला ppt रे हम ताको कहूची next which of the following bodies of water has the lowest salinity एबे lowest salinity आपन को पछारी छी मते कहि परिबो की which of the following bodies of water has the lowest salinity red sea अच्छी ऑप्शन रे देखो red sea भी अच्छी पर्शियन गल्फ भी अच्छी बट एठी बाल्टिक सी भी अच्छी oops sorry मातारे असो कोन कहबा yes that is the right answer कोन ना बाल्टिक सी क्वेश्चन आपन को माइंड आस तो मैम रेड सी तो अच्छी बट बाल्टिक सी कोन पे हमें राइट आंसर मारिबा व्हाई नॉट रेड सी Red Sea is one of the saltiest sea due to the high evaporation and the minimal river flow. But जेते बेले ऑप्शन आपण मानक पाखु कोन आसुची ना आपणकर बाल्टिक सी आसुची ताको हमें कहा सहित रिलेट करे परिबा मते को this is the lowest salinity due to the heavy river inflow
and low evaporation and cold climate. That means Red Sea पाखरे जेते बेले आपनकर Baltic Sea थिबो Red Sea भी फिका पड़ी जिवो Baltic Sea एटी कोन ना आगु को पळेबो. ओके सो राइट आंसर कोन होची ना Baltic Sea. बाकी तो Mediterranean Sea आपण मान जानि सन्दी दिस इज वेरी लो. इवन Red Sea टू भी आपनकर कोन ना लो हबो. ओके चलो नेक्स्ट देखिबा माने Mediterranean Sea आपनकर हाई salinity हेसिबो. ओके दैट इज caused by the evaporation but exceeding the precipitation but rather than the red and Baltic to the कम ही रहबो. Also the Baltic Sea has the lowest salinity among the listed below bodies of water due to the high inflow of fresh water. Next one देखो in the northern hemisphere कौन कहूची in the northern hemisphere which part of the ocean usually has a higher salinity. northern hemisphere को जदि हमें consider करूछे ताहले मते कुओ हाई salinity कोठी रहूची. In the northern hemisphere which part of the ocean usually has high salinity कौन कहि परिबा ना in the central part रे कोथि पय हमें central part को कहिबा काहे कि नुह आपनकर western नाही eastern नाही polar नुह polar तो बिल्कुल हबनी आपण मान जानि संदी freezing ground रे आपनकर कोन salinity कम ही रहइबो melting condition रे salinity बढ़िबो हरे नै को western रे हबनी because that influenced by the warm current and the rainfall. western रे हैला या फिर eastern रे हैला आपनकर कोन western रे आपनकर warm current flow करे warm current eastern रे आपनकर cold current. so याको हम रिलेट करि परिबानी. ओके the one and option left is the central part. next मते को अरे ऑप्शन ए आसी कोन राइट आंसर ठीक है सेंट्रल पार्ट सी हेबा कथा एक्चुअली आपनकर बिकॉज़ हाई प्रेशर आपनकर क्लियर स्काई सेठी रुए. ओके तो हम रिलेट करै परिबा कथा एक्चुअली आपनकर का सहित ना सेंट्रल पार्ट सहित बट एठी वेस्टर्न मेराइन सहित कोन पे देछि. in the northern hemisphere ocean currents play a significant role in the salinity distribution. the warm currents near the equator region pushes away less saline water. no actual right answer आपनकर सेंट्रल पार्ट सब एटा को एलिमिनेट करिवो हैला. चलो नेक्स्ट मते कुओ what is the approximate percentage of sodium what is the approximate percentage of the sodium chloride in the total dissolved solid of ocean कोन हबो what is the approximate percentage of the sodium chloride कहितली sodium chloride आपनकर अधिक रुहे को मते कोटा अधिक रुहे को पार्टटा आपनको अधिक बोली कहितली sodium chloride तो आपनको कहितली ना almost 77.7% or 77 to 78%. Which require no. Next चलो मते को which of these salt is the second most abundant in sea water. तो कोउटा को second most कहउचे sodium chloride पर आउ गोटे वर्ड कहितली. This is also related to the chloride अपन कटा थिला कोन कहउचे ना obviously ताको हमें magnesium chloride कहउचे जे कि अपन कर 10.8% or 10.7% अपन कर थिला कोन कहउचे ना मैग्नीशियम क्लोराइड बोली कहिबा हैला. ये समन्विता 16 को पळे आसा सॉरी 15 ता आपनकर केमती 77% हबो 15 ता आपनकर 10 पॉइंट समथिंग हबो ना एठी आपनको सेकंड पचारि छी सेकंड मोस्ट हेले आपनकर मैग्नीशियम हबो जदी फर्स्ट पचारि थांदा सोडियम क्लोराइड हेता हैला एंड सेकंड ता आपनकर ओनली 10.7 और 10.8% अछि कैरी करू ठीक अछि. चलो नेक्स्ट मते को sodium chloride is the most abundant salt in the sea water. accountant एठी आपनकू sodium chloride कथा कहिनी एठी पचाछि which of this sodium is the salt is the second most abundant in sea water. एटा आपनकर कोन हबो ना ऑप्शन ही magnesium chloride बट एक्सप्लेनेशन लागि जायछि sodium chloride हैला एटा आपनकर 70 अच्छा ठीक अछि कारण एठी आपनकर 77% लिखिछि फर्स्ट देन एठी 10% लिखिछि हैला magnesium chloride ठीक अछि. चलो नेक्स्ट मते कुह अगेन ओडिसा टीचिंग एग्जामिनेशन रो एति की बैच हम पाखे अछि जेमिति की एसएसबी टीजीटी पे आपण मान नै परिबे 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 प्राइस यदि आपण माने जेटी या फिर एटी प्रिपेयर करूछंती 1 इयर वैलिडिटी सहित 1199 एंड संस्कृत रो जदि आपण माने स्पेशल पेड बैच नेबा को चाहछंती एसएसबी टीजीटी अंडर रे ताले 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 ने प्राइस रे आपण माने परचेज करि परिबे. एटा होची ऑफिस नंबर आपण माने ठीक कॉल करी की हेल्प पाई परिबे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो why is salinity low in the polar region. salinity कोथि पई आपनकर लो रहिबो polar region रे कोथि पई बिकॉज़ आपण जानि चंती आइस तो रहिले आइस जदि फ्रीजिंग होची आइस आपनकर मेल्ट भी हबो ना तो आइस आपनकर फ्रीजिंग हेबा सहित मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और मेल्टिंग ऑफ आइस आपनकर होची हां ना नाही मते कुओ
yes or no? So this is the reason आमे जानी छे हाँ ना नहीं the fresh water in food that dilutes the sea water that lower the salinity. Okay, next question कौन कहूची मते कुह the Sargasso Sea is characterized by Sargasso Sea को आमे जदी characterize करछे जेंति Red Sea गला Baltic Sea गला Red Sea is the saltiest one ताठो अधिक आमे कहूचे Baltic Sea but एठे जदी आपन को Sargasso Sea पचारछि this is what मते कुह लो salinity बिल्कुल नुह extremely cold नुह आपनकर high salinity सहित calm conditions रहिबो high salinity सहित calm conditions आपनकर रहिबो that is the कोन ना Sargasso Sea एतिकी रिलेट करै परिबो लोकेटेड इन द कोठी ना ये आपनकर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन रे प्रेजेंट रुहे ओके जोथरे की करंट बहुत ही वीक थाए नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह sorry मते को the relationship between evaporation and salinity is the relationship between the evaporation and the salinity is आपनकर कोन रहउची evaporation भी होउची salinity भी होउची कोन कहि दिली मते कुह they are directly proportional evaporation जदी बढ़ुची salinity भी बढ़ुची evaporation जदी कमुची salinity भी कमुची तो ये आपनकर directly proportional हेबेनी की इनवर्सली केमिति जदी evaporation बढ़िला बेले salinity कमु थांदा ताहाले हम ताकू कहबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेते बेले हायर evaporation that removes the water that is increasing the कोन salt concentration in that particular water left behind ओके ताकू रिलेट करि परिबा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेले जस्ट तार ऑपोजिट हे जिवो salinity does not decrease with evaporation that increase ओके चलो मते को व्हाट इज द एवरेज salinity of the Atlantic Ocean the Atlantic Ocean रो एवरेज salinity केते हबो छुआ जल्दी मते कुह व्हाट इज द एवरेज salinity व्हाट इज द एवरेज salinity of the Atlantic है बसंत पाठोडा पूरा तमरो बोही जाउची बुझिलो एबे जाओ हरि बाबा जाओ एग्जाम रे पढिबो तमे केते रन कलो केते विकेट नेलो सब पढिबो एग्जाम रे गो चलो केते हबो हां 19 नहीं 36% 19 नहीं 19 ऑप्शन ही तो नहीं अच्छा 39% करछ नो 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 36% एक्चुअली रे आपनकर ये ह हैला सबुठु अधिक सी ना 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 सबुठु अधिक 36 हबो बिकॉज़ अटलांटिक इन द saltiest major ocean हमें कहउचे ड्यू टू द हाई evaporation and limited आपनकर फ्रेश वाटर इनफ्लो रुहे बट ता सहित 36 39 सहित बेसी वेरी करेनी बट हेले भी 36 हैला चल तो ऑप्शन बी केते 36 पार्ट 4000 नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच कंटिनेंट्स रिवर डिस्चार्ज significantly lowers the which continents river discharge significantly lowers the salinity of the Arctic Ocean Africa South America Eurasia और ऑस्ट्रेलिया कहा गोटी रिलेट करे परिबो ऑब्वियसली यूरोप एंड एशिया को मिसै परिबा की सुशील कुमार दास वेरी गुड मॉर्निंग को मते अफ्रीका तो हबनी बिकॉज़ वी नो दैट देयर इज नो मेजर रिवर फ्लो इनटू द अफ्रीका लाइक माने कोन आर्कटिक टू आर्कटिक फ्रॉम एशिया आपनकर अफ्रीका रु किछ एमदी नाही राइट आंसर कोन हबो ऑब्वियसली आपनकर यूरेशिया हबो why we consider the Eurasia instead of all other options because we know the largest river like आपनकर कोन ओव अछि सेठी आपनकर लेना अछि सेठी तो हमें रिलेट करि पारे because of the huge fresh water volumes आपण माने रिलेट करेबे यूरेशिया सहित rather than the all other options next question मते कहिबो the boiling point of sea water is boiling point of sea water आपनकर केते रहइबो is what than the pure water तो हाई रहे लो रहे या फिर सेम रुहे और व्हाट मते कुह जेते बेले हमें कहूचे डिसॉल्व रुहे सॉल्ट्स इन द राइजिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट दैट मींस द बॉइलिंग पॉइंट आपनकर कोन हुए ना एलिवेट हुए एलिवेशन हुए तो सी वाटर आपनकर कोन करूची ना बॉइल्स एट अ स्लाइटली हायर टेंपरेचर दैन द 100 डिग्री सेल्सियस दैट मींस हमें एठी कहि परिबा कि ये आपनकर कोन कोची ना हायर लेवल रे रहूची ऑप्शन डी आसुची साधना ना रे वेरिएबल करे नहीं से आपनकर हाई कंडीशन में ऑलवेज रुहे so boiling point sea water is higher than that of pure water next मते को freezing point of sea water
इज कौन रुहे फ्रीजिंग जदि आपन को बॉइलिंग वाटर पचारछि सेमिति फ्रीजिंग कथा भी पचारिबी तो फ्रीजिंग पॉइंट कहले कोन हबो ऑब्वियसली बॉइलिंग रो अपोजिट हेतिबो दैट मींस ये कोन हबो ना डिक्रीज करिवो बॉइलिंग रो अपोजिट ये हबो दैट मींस ये डिक्रीज करिवो हन नै कुआ yes or no boiling रो अपोजिट आपनकर फ्रीजिंग हबो दैट मींस यदि बॉइलिंग रे इंक्रीज है जी फ्रीजिंग रे डिक्रीज हबो केते हबो -1.9 डिग्री सेल्सियस एट लीस्ट हन नै कुआ सी वाटर जेते बेले आपण माने फ्रीज करिवे एट अबाउट -1.9 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द डिसॉल्व्ड सॉल्ट ओके नेक्स्ट मते कुह द ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन ए जो ग्रेट सॉल्ट लेक आपनकर अछि एटा एक्जेक्टली को जगह रे लोकेट रहउची मते कुह द ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन टर्की यूएसए जॉर्डन और रशिया देखो टर्की रे आपण माने जानि चंती आपनकर किछि सेमती सॉल्ट लेक तो नहीं बट यस टर्की हैज ए लॉक वेन वैन लॉक आपनकर सॉरी लेक कौन होची ना वैन आपनकर लेक रहउची बट एठी आपनकर राइट आंसर जॉर्डन नाही रे एठी यूएसए आसी जीवो यस द ग्रेट सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन द यूएसए इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट कहरो ना उत्तर क्लियर यूएसए रो उत्तर स्टेट रो ये नॉर्दर्न पार्ट रे प्रेजेंट रहउची हैला क्रिकेट रे मन रहिले आ क्लास रे केमती मन रहइबो तमरो भूल तो हबो ना आसो मते को which tool is used to measure salinity based on electrical conductivity which tool is used to measure salinity based on electrical conductivity is that barometer is that salinometer seismograph anemometer जते बेले आपन को salinity मापिया पय कहछि तो ऑब्वियसली आपन माने ढाबा एठी बढ़िया वाला ढाबा बाडै परिबे the salinometer because we all know the barometer uses कोन मेजर करे atmospheric pressure 50 थरा एटा आपन को कहि सारिछि देखि छ ना नाही मते को atmospheric pressure को ये मेजर करे देन आपन को seismograph कहिले कोन होची मते को ना ये मेजर करूची कहा को ना earthquake को then salinometer कहिले कोन कहउछ ना electric conductivity of the sea water that means the salinity of the माने कोन electrical conductivity then anemometer कहिले कोन ना wind speed को anemometer is related with what now wind speed clear चलो नेक्स्ट मते को लेक वैन एबे ही कहितली वैन कहिले कोन बुझिबो लेक वैन कोठी आपनकर अछि ऑब्वियसली टर्की रे अछि कहितली ना एबे कहितली ना टर्की बोली तो टर्की सहित रिलेट करिबो इजराइल सहित डेड सी आपण मा रिलेट करि परिबो इजराइल हैज द डेड सी ईरान हैज द सलाइन लेक ओके चलो इजिप्ट रे किछि अछि कि इजिप्ट रे आपनकर कोन गंबुज उडा अछि तो इजिप्ट का हम रिलेट करि परिबा मम्मीस मान के सहित okay there is no major saline like the vein next so next question mate ko which current increases the salinity of the north sea कोटा increase करेबा आपनकर salinity of north sea labrador current north atlantic drift oasio current or benguela current कौन होबो right answer which current increases the salinity of the northern sea कौन हबो that is the northern sea कहिछि माने north atlantic drift सहित रिलेट करै देबा काम शेष आपनकर labrador current या आपनकर cold current सब बेले salinity को reduce करे salinity को कोन ना increase करैबो नाही north atlantic drift को काहे के हम रिलेट कर परिबा because it has a कोन ना warm current एठी आपनकर कोन ना cold current तो cold current हेले कम करबे डिक्रीज करेबो हैला चल नेक्स्ट मते को व्हाट हैपन टू डेंसिटी एज salinity increases यदि salinity increase होची ताहाले मते कुह तार डेंसिटी कोन हबो डिक्रीज हबो या फिर इंक्रीज हबो ए माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि salinity increase होची ताहाले डेंसिटी भी इंक्रीज हबो density that dissolves with the salt increases the mass per unit तमे कहि परिबा कोन हबो ना डेंसिटी भी इंक्रीज हबो density increase haba with the increase of na salinity in the water एतिके क्लियर नेक्स्ट कोन कहिछि ना हाई salinity waters are generally high salinity water को हमें जनरली जदी कंसीडर करू छे ताकू को ग्रुप रे नै परिबा एनीवन कैन देखो जते बेले हाई salinity कथा कहू छे से सब बेले आपनकर कोन ना हेवियर हबो
डेंसर हम कहीं लाइटर हबनी बिकॉज आमे जानी छे लाइटर ऑलवेज द फ्रेश वाटर इज द लाइटर दैन द saline water that universal truth and heavier कोथि पई हमें कहि परिबा बिकॉज ऑफ द salinity आपनकर इंक्रीज करिबा डेंसिटी को जेते बेले इंक्रीज डेंसिटी करूची दैट मींस ए हेवी हे जिबा रादर देन द फ्रेश वाटर as simple as this हो ना नहीं यस चलो नेक्स्ट मते कुआ एबे कहिले बी ही तो कहली ना बी ही तो मारी जी कौन कहूछ सुशील कुमार आस मते को व्हिच इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सॉल्ट इन द ओशन कोटा गोटे प्राइमरी सोर्स नुह सॉल्ट ओशन रो व्हिच इज नॉट देखो कौन अछि रिवर डिस्चार्ज वोल्केनिक इरप्शन ओशन बेड इरोजन फोटोसिंथेसिस गाइस फोटोसिंथेसिस रो कौन रिलेशन एठी रहछि मते को फोटोसिंथेसिस रो किछि रिलेशन अछि कि दिस इज अ टोटल बायोलॉजिकल प्रोसेस this is a total biological process so obviously आपनकर photosynthesis is not आपको हमें eliminate कर देबा बाकी रेस्ट को हमें रिलेट करई परिबा मैम ता पूर्व क्वेश्चन कहिले ना salinity increase हेले डेंसिटी बढ़िबो हां salinity increase हेले डेंसिटी ही तो बढ़िबो ना देखु ना कौन कहि छि केठी हाई salinity waters are generally हाई salinity waters generally कौन हबो जेते बेले डेंसिटी बढ़िबो तो सेटा हेवी हेई जिवो ना डेंसिटी बढ़ुची माने वाटर टा तो हेवी हबो ए फ्रेश वाटर टू तो हेवी हबो से यहां तो कहली आ कोन कहली से तो सुशील कहली चलो नेक्स्ट मते को salinity affects which of the following salinity आपनकर अफेक्ट करिवो कहा को या भितरु क्विकली को salinity affect करे which of the following compressibility आपण जानि संती salinity reduce करे compressibility को डेंसिटी salinity कौन करिवो salinity increase हबो जेते बेले डेंसिटी इंक्रीज होची salinity increase that means density increase with the salinity then आपनकर boiling point रहिला boiling point आपनकर एलोन तो किछि करि परिबनी boiling point rises with the salinity so salinity affects which with the following obviously आपनकर कोन ना गवर्नमेंट ऑप्शन all of these को हमें चूज करि परिबा हैला बुझी पारलो because salinity influence multiple physical properties of the salt water or the sea water को हमें रिलेट करै परिबा बुझिलो ना कोठे डाउट अछि कि आउ सुशील बुझी पारलो प्रीवियस वन ओके आसा so right answer is the D compressibility increases with higher salinity density increases as the salinity increases boiling point increases with the higher salinity and again कहूची जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन बाय प्रिपेयर होचंदी एसएसबी टीजीटी आपण माने 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 नै परिबे प्रारंभ आपण माने जेटीएटी रो 1 इयर वैलिडिटी सहित 1199 पे नै परिबे या फिर संस्कृत रो पेड बैच आपण माने 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 नै रहि परिबे दिस इज द हेल्पलाइन नंबर आपण माने कॉल करी कि एठी क्वेरी रिजॉल्व करि परिबे apart from that जदि वन डे एग्जामिनेशन पय प्रिपेयर करूछंदी ताहाले महापैक आपण माने नै परिबे 4000 रे जोथरे कि सब वन डे एग्जामिनेशन कवर अप हे जिवो वैलिडिटी 2 इयर हैला नेक्स्ट जदि सिविल सर्विस पय आपण माने प्रिपेयर करछंदी ओएस हेबार स्वप्न गुटे आपण मानक पाखरे अछि ताहाले अधिकारी बैच नै परिबे प्री रो 2025-26 1 इयर वैलिडिटी सहित 6999 अधिकारी बैच आपण माने प्री प्लस मेंस भी नै परिबे दिस इज द फंडामेंटल बैच 1.5 इयर वैलिडिटी आरो रहउची देखो एटा सब 1 इयर वैलिडिटी whereas fundamental 1.5 इयर वैलिडिटी and आपको 11999 नै परिबे apart from all these आपण माने स्पेसिफिक मेंस बैच ऑप्शनल बैच एगुडा को भी नै परिबे रेस्पेक्टिव प्राइस रे यदि किछि भी क्वेरी अछि बस हेल्पलाइन नंबर को कॉल करंतु एंड क्वेरी सॉल्व करंतु दैट्स इट बाकी वेदांत टीचिंग चैनल यू आपनकर टेलीग्राम रे अछि ताको फॉलो करंतु जॉइन होंतु ए क्लास रो पीडीएफ क्लास एंड रे मींस एबे वाइंड अप कला पारे मु शेयर करतेबी वेदांग रो टीचिंग टेलीग्राम चैनल ठीक अछि बाकी जो माने मो सहित अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप रे यदि टीचिंग स्टूडेंट पिला के अछंदी से मानको भी प्रोवाइड करि देबी ठीक अछि सो चलो थैंक यू सो मच होप आपण मानको क्लास भल लागि थिबो मैडम आज मॉर्निंग रे क्लास होजी मोरो मंगलवार गुरुवार शनिवार 3 दिन मोरो मॉर्निंग रे क्लास रुहे टीचिंग रे हैला नाइट रे क्लास हुए डेली राति 10 रे बट 3 दिन क्लास रुहे अल्टरनेटिव डे ऑफ केडीएस सर मोरो क्लास रुहे आपनकर वेदांत टीचिंग रे
ठीक अच्छे तो मंगलवार गुरुवार शनिवार मो क्लास करने को आपण मैंने आसीजे डेली आसतु केडी सर तो आपण जानते बढ़िया क्लास करती केडी सर क्लास भी करूँ मो क्लास भी करूँ मुझे जियोग्राफी पोर्शन कवर अप करे जोटा केडी सर करते है सो आपण मानकर बेनिफिट ही रही चलो थैंक यू सो मच होप आपण मानक क्लास भल लगी क्लास एंड जब भल लगी किसी गोटे राइट माने कमेंट रे रिव्यू दे देबे बाकी रिव्यू देखिए मु नेक्स्ट क्लास रे कोन आपण मानक पई अपग्रेड करि परिबी दैट आई विल डिसाइड थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रायोरिटाइज योर पेरेंट्स दिस विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी नो वन एल्स इन द वर्ल्ड थैंक यू